हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आलोक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द महादेव अकेडमी। हम लोगों ने पिछली बार इनहेरिटेंस चैप्टर चालू किया था। मेंडल्स लॉ के लॉ हम लोग पढ़ रहे थे। आगे का एक टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस कैरेक्टर ए क्या, एक जीन की इनहेरिटेंस क्या होती है। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out the Mendel, where the cross tall and dwarf pea plants to study inheritance of one gene. He cut the seed produced as a result of cross and grew them, generate the plants of the first hybrid generation. This generation is also called the filial progeny or the F1. इसकी एक जनरेशन हाइब्रिडाइजेशन के लिए थी पी प्लांट से, जिसका नाम था फिलियम प्रोगेंसी और F1. मेंडल ऑब्जर्व दैट द ऑल द F1 प्रोगेंसी प्लांट वर टॉल लाइक वंस, मेड अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन एंड द अदर पेयर ऑफ ट्रेड. ही फाउंड द F1 ऑलवेज रिसेंबल ईथर वन ऑफ द पेरेंट एंड दैट वर ट्रेड ऑफ द अदर parent was not seen in them. Mendel then the self-pollination the tall F1 plant, and the surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring dropped the character that was not seen in one generation. इन्होंने क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, तो इन्होंने ये देखा कि इनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग थे F2 के, उसमें जो चीज़ें पाई गई थी वो F1 जनरेशन की काफ़ी चीज़ें नहीं थी। जो F1 जनरेशन में नहीं दिखा था वो F2 जनरेशन में हम लोग को देखने को मिला. वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड द proportion of plants that were dwarfed were 1/4 of the F2 plant, where the 3/4 of the F2 plant were tall. The tall and the dwarf traits were identically to their parent type and did not show in any blending. That is, the offspring were the either the tall and dwarf, or none were in between heights. Similar result was obtained with the other trait that he studied. जो अदर ट्रेड्स थे उससे भी इसको इसी टाइप का सिमिलर रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था. Other trait that he studied, only one of the parental traits was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage both of traits were expressed in the proportional 3:1. इसका जो रेशियो आता है ये proportional 3:1 था F2 जनरेशन का. दोनों जनरेशन का F1 और F2 जनरेशन का जो रेशियो निकला था वो 3:1 था. द कॉन्स्टेंट ट्रेट डिड नॉट शो द ब्लेंडिंग इधर F2 और F1 स्टेज. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stable passed down uncharged from the parent offspring thought the gamete over the successive generation. He called these things as factor. इन्होंने इन चीज़ों को फैक्टर के रूप में देखा. फैक्टर का नाउ वी कॉल देम एज जीन्स. अब इन्होंने इसका नाम रखा जीन्स. Therefore, are the unit of inheritance. They contain the information that they require to express particular traits in the organism. Gene which code for the pair contrasting traits is known as alleles. के जो contrasting traits थे जीन्स के, code of the pair of contrasting traits जो थे alleles, they are the significantly different from the same gene. If we use alphabetic symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage, and the small alphabet that other trait. For example, in case of the character, the height T is used for the tall trait and the small t used for the draft. जो बड़ा T है वो tall के लिए है और जो छोटा T है वो draft के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. T and T are always alleles of each other. ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के alleles हैं. Hence in the plants the pairs of alleles for height would be T. एक दो बड़े T, एक बड़ा T, एक छोटा T या दो स्मॉल T. ये तीन एलिल्स हम लोग जो हाइट के
एलील्स हैं, ये 3 एलील्स हैं। मेंडल ऑल्सो प्रोवोड दैट द ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्रॉट फ्री वेराइटीज इन द allelic pair of the gene height are identically homozygous respectively. T are called them the genotype. अब ये जितने ये दो जो पेयर थे टी और स्मॉल टी के, इनको हम लोग कह रहे थे जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, वेयर दे डिस्क्रिप्ट द टर्म टॉल एंड ड्राइव, जो टॉल और ड्राफ को डिस्क्राइब कर रहे थे, आर द फिनोटाइप, जो फिनोटाइप। व्हाट देन वुड बी फिनोटाइप एंड प्लांट हैड द जीनोटाइप टी, एज द मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1, जो F1 में फिनोटाइप थे हेट्रोजाइगोट टी exactly like the small parent in the appearance. He proposed that the pair of dissimilar factor once dominant of the other as the F1, the hence is called the dominant factor, where the other factor recessive, इसमें एक dominant एक recessive. In the case of T, the tallness and the dominant of T was dwarfness, that the recessive he observed identically behavior all the other character trait pairs in the study in convention the logic to use the capital lower caste and the alphabetic symbol. Remember the concept of dominance and the recessively. Do not use T or the tall and D for the draft. You will find that difficult to remember whether the T and the D are the alleles ऑफ द सेम जीन। अब इसमें अगर हम लोग डी को ड्राफ्ट मानेंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि टी और डी सेम एलील्स के एलील्स हैं। जीन्स कैरेक्टर आर नॉट, एलील्स कैन बी सिमिलर एट द केस ऑफ होमोजाइगोट टी एंड स्मॉल टी आर कैन बी डिसिमिलर एज द केस ऑफ द हेट्रोजाइगस। सिंस द plant the heterozygous gene controlling the one character height, it was a monohybrid and the cross between the TT and the monohybrid cross, इसमें ये जो थे ये monohybrid cross है। From the observation the recessive parental trait is expressed without the bleeding of the F2 generation, where can be inferred that the tall and the dwarf plant produce the gamete by the processes of meiosis, and the alleles of the parentally pair the separate the segregate and from each other, and the only alleles is transmitted to the gamete। जो alleles थे वो केवल alleles ही transmitted होते थे gamete से। The segregation of alleles is the random process, जो segregation of alleles ये random process है। There with the 50% chance to gamete contain the ether alleles, यहाँ पे 50% chance होते हैं जो gamete जो ether alleles contain कर ले। As been verified the result of the crossing in the way the gamete of the tall plant have been the alleles T and the gamete of the dwarf plant have been the allele small t. During the fertilization, two alleles T from the parents and the pollen and the small t from the other parents, then throughout the egg are united to produce the zygote, and the big T alleles and the small t alleles is not other, and the hybrid have the T small and big T pair. Since these hybrid contain the alleles with the experienced contrasting trait, and the parents are heterozygous and the producing the gamete parents formation zygote in the F1 to F2 generation. F2 plant can be understood the diagram called the Punnett square। अब ये जो इसका डायग्राम है Punnett स्क्वायर, इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि F2 और F1 जनरेशन में क्या है। F1 जनरेशन है, इसमें एक टॉल है और एक ड्राफ्ट है, इसके दोनों गैमीट हैं। अब जो F2 जनरेशन में आएगा तो इसमें टॉल का गैमीट जो है वो टी, एक बड़ा टी है एक स्मॉल टी है, और इन दोनों का पेयर होगा दूसरे जनरेशन, जो एक फिनोटाइप रेशियो होगा टॉल का 3 ड्राफ्ट का 1, और जो जीनोटाइप रेशियो होगा अब वो इन दोनों के पेयर में होगा, जिसमें T1 होगा, बिग टी स्मॉल टी 2 हो गया, दोनों स्मॉल टी हैं अगर तो 1 होगा। It was developed the British genetics regardless Punnett
It is a graphical representation that calculate the probability of the all possible genotype offspring in the genetic cross. The possible gamete are the reentered two sets, usually the top row and the left column. All possible combination represented in the box in the below the square, which generate the square output from the Punnett square. Show the parental the टू बिग टी मेल एंड द ड्रॉप टू स्मॉल टी फीमेल. अब इसमें दो बिग टी हैं तो मेल और दो स्मॉल टी हैं तो फीमेल प्लांट. द गैमीट प्रोड्यूस देन एंड द F1T and small t produce the F1 plant is the genotype. And self pollination, the symbol male and female are used to denote the female egg and the male pollen. F1 generation is essentially the F1 plant of the genotypes big and small t. When self-pollinated produce the gamete and the genotype T and T equal to proportional. When the fertilization take place to the pollen grains and the genotype T have the 50% chance to pollinate the egg of the genotype T. Well, the genotype T also the pollen grain genotype they have the 50% chance of pollinating the egg of the genotype T. As the result, the random fertilization result, the zygote can be a genotype. From the Punnett square, easily see the 1/4 of the random fertilization lead, the T1 by 2 lead and the T/4. अब इसका रेशियो है, एक है 1/4 का, एक है 1/2 का और TOT का भी 1/4 का ही है. F1 has a genotype and the phenotype character seen in the tall at the F2 3/4 plant and the tall where the sum of them, while other are the TOT accidentally the not possible the discretion between the plant with the genotype. Hence within the genotype pair only one character T tall is expressed, hence the character T or tall set to the dominant over the other alleles T dropped. It does due to this dominance of the one's character, the other F1 tall and the genotype TOT in the F2 3/4. F2 का जनरेशन का रेशियो होगा 3/4. The plant are thought the genotypically 1/2 in the TOT only the 1/4 TO. इसका जो बड़ा T और छोटा T इसका रेशियो 1/2 होगा. अगर दोनों बड़े T हैं तो इसका रेशियो 1/4 होगा. लीड ऑफ द phenotype that रेशियो 3/4 and 1/4 T and T plus 1/2 T is एक बड़ा T एक small t and the 1/4 TOT. The ratio is the 3:1 but the genotype ratio is the 1:2:1. इसमें दो टाइप के रेशियो आएंगे लास्ट में, 3:1 फिनोटाइप का और जीनोटाइप का 1:2:1. 1:4 and 2:1:4 ratio. The T and T mathematically condensable the form the binomial express AX and the VY have the gamete pair in the T and T equal frequency 1/2 express the expanded of given below. Mendel self-pollination F2 plant and the found that drop the F2 plant continue generate the tall plant and the F3 and F4 generation he concluded that the genotype dropped homogeneous T and T would not be think he would have to got had he self-pollinated tall F2 plant. Processing paragraph line. It is a clear thought the genotype ratio can be calculated the mathematical probability by simply looking at the phenotype the dominant trait. It was not possible to know the genotype composition that is the, for example, whether the tall plant from F1 or F2 generation has been TOT composition cannot be predicted. Therefore the determinate the genotype the tall of the F2 Mendel cross the tall and plant and the F2 with the drought plant is called the test cross. इनको अब बोला जाएगा टेस्ट क्रॉस. जो TOT tall F2 और F1 जनरेशन थे ये दोनों टेस्ट क्रॉस थे. Typically test cross an organism P plant here they showing the dominant phenotype whose
Genotype is the determination cross the recessive parents in instant the self crossing the progenies such as the cross where the easily annuls to predict the genotype test organism F. Diagram 5.5 show the result of the typical test cross where the volite color flower W and the dominants are the white and the color flower W. 5.5 इसमें W इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा इसमें एक वाइट है, जिसे दोनों जो W होंगे वो बड़े होंगे, जिसमें जल पर्पल है इसमें एक बड़ा एक छोटा होगा। सो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हर हर महादेव।